Chapter 8 Motion Part 1. What is motion? Motion is basically the movement of any object or body. मोशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो मोशन में होती है. Let's take some everyday life examples. Birds fly, fishes swim, or a car that travels on the road. All these are basic examples of motion. Now let's study motion in terms of physics. An object is said to be in motion if its position changes with respect to time as well as its surroundings. एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है? जब उसकी पोजीशन चेंज होती है. किन्हीं दो टर्म्स के रिस्पेक्ट में. वो दो टर्म्स क्या हैं? टाइम एंड सराउंडिंग्स. टाइम और सराउंडिंग्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे विजुअलाइज करके. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं मोशन में वो मूव कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में. कुछ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अपना मोशन शो करते हैं. कुछ रोटेट कर सकते हैं और कुछ जो है वाइब्रेट कर सकते हैं. तो मोशन इन सब फॉर्म्स में हो सकता है. नाउ लेट्स स्टडी रेस्ट. रेस्ट की डेफिनेशन को मोशन से ही डिराइव कर सकते हैं. An object is said to be in rest if its position does not change with respect to time as well as its surroundings. तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब हुआ? जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में भी और सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में भी. Let's take some basic examples of rest also. Like a person sitting on a chair, a bus standing on the bus stop. All these are the examples of rest. Let's study the third term known as reference point. मोशन और रेस्ट में हम सराउंडिंग्स की बात कर रहे थे. वो सराउंडिंग इस रेफरेंस पॉइंट से क्लियर हो जाएगी. A reference point is a place used for comparison to determine whether an object is at rest or in motion. रेफरेंस पॉइंट वो एक प्लेस है जिससे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है. बिकॉज फॉर अ पर्सन an object may be at rest, but for other person, the same object may be in motion. So, to describe the position of an object, we need to specify a reference point, also known as origin. Let's understand this with an example. Suppose we take a railway station and a school. Railway station is reference point. We define the position of the school with respect to railway station. Suppose we say that the school is 5 km north of railway station. What does that mean? That means we are just defining the position of the school with respect to the railway station. So what is the railway station? It's our reference point. And the school is defined as 5 km north from the railway station. In this chapter, we shall learn about motion along a straight line. हमने मोशन के कई सारे फॉर्म्स पढ़े हैं पर इस चैप्टर में हम मोशन को स्ट्रेट लाइन के अलोंग पढ़ेंगे. अब मैंने आपसे विजुअलाइज करने की बात की थी. अब हम मोशन को विजुअलाइज करते हैं. This is an office which is taken as reference point and this is the track in which a car will move. This person is in his office at 9 a.m. and now he will travel 300 kilometers in 1 hour and reach point A at 10 a.m. So in this case, the person is changing his position and time is also changing with respect to surroundings. Both the things are changing. Now let's see rest. Again we take an office and a track and the person who is now at point A at 10 a.m. Now we see that this is the reference point. At 11 a.m. he is still standing here. So what do we conclude? We conclude that his position does not change with respect to the surroundings. So the body is at rest.
let's study another term, that is physical quantity. The quantity that can be measured are known as physical quantities. For example, length, weight, height, all these can be measured. Length, suppose we take 5 meter, then this 5 is the numerical value of the physical quantity and it is known as magnitude. Now we have two types of physical quantities. First is scalar quantity and second is vector quantity. What is scalar quantity? The quantities which have only magnitude but no direction. What does that mean? It means जिन क्वांटिटीज में खाली मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी खाली न्यूमेरिकल वैल्यू हो पर उनका कोई डायरेक्शन ना हो, वो क्वांटिटीज होती है स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? सपोज वी आर ट्रेवल 30 kilometers. This is the distance. We are not taking any direction, we are not involving any direction in this context, so this is the scalar quantity. Now what is vector quantity? These physical quantities have both magnitude as well as direction. जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से डिस्टेंस ही होता है, बट उसमें हम डायरेक्शन दे देते हैं. सपोज वी से दैट 30 kilometer north, then in this we have given magnitude also and direction also. So this is vector quantity. अगली स्लाइड में हम फिजिकल क्वांटिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी डिटेल में पढ़ेंगे. टिल देन, थैंक यू.